प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नेस्कॉम टेक्नोलॉजी इत्येतां व्यापारसमितिं नेतृत्वमञ्चं च सम्बोधयिष्यति। प्रविधि नवाचार क्षेत्राणां प्रमुखजनानां परस्परसम्मेलनार्थम् एषः मञ्चः महत्वपूर्णः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायंकाले 4:30 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन तमिलनाडुस्थे तैलवाती क्षेत्रस्य प्रमुखपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति, अपि च तस्याः आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यते। मध्यप्रदेशस्य सीधी इति स्थाने एका दुःखप्रदायी बसयान दुर्घटना जाता। सीधी इत्यस्य रामपुर नैकिन आरक्षकालये 54 यात्रिजनानां बसयानम् एकस्मिन् स्रोते अपतत्। COP26 इत्यस्य मनोनीताध्यक्षेण आलोक शर्मणा प्रधानमन्त्रिणा साकं कृतं मेलनं जलवायु परिवर्तनं COP26 भारत ब्रिटेन सहयोगं च आधृत्य विहिता चर्चा। पर्यावरण मंत्रिणा प्रकाश जावड़ेकरेण साकं मेलने पारंपरिकोर्जसं वर्धयितुम् अंगारकोत्सर्जने न्यूनतादिशि विहिता महत्वपूर्ण चर्चा। अपि च क्रीडावार्तासु इंग्लैण्डदेशं विरुद्ध्य प्रवर्तमानायां चतुस्रीणां स्पर्धानां क्रिकेट निकषस्पर्धा मालिकायां ह्यः द्वितीयायां क्रीडायां भारतेन इंग्लैण्डदलं 17,300 धावनाङ्कैः पराजित्य स्पर्धायाम् एकम् अंकं विरुध्य एकेन अंकेन समत्वमस्ति समधिगतम्। अभिवादये, अहमस्मि आशीषः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नेस्कॉम टेक्नोलॉजी इत्येतां व्यापारसमितिं नेतृत्वमञ्चं च सम्बोधयिष्यति। प्रविधि नवाचार क्षेत्राणां प्रमुखजनानां परस्परसम्मेलनार्थम् एषः मञ्चः महत्वपूर्णः अस्ति। अद्य अपराह्णे 12:30 प्रधानमंत्री व्यापारक्षेत्र सम्बन्धान् जनान् सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् मञ्चे प्रविधि नवाचार क्षेत्राणां प्रमुखाः सहभागं भजिष्यन्ति। NTLF इत्यस्य एषः 29तमः वर्षः अस्ति। NTLF $90 बिलियन मितात्मकम् उद्योगाय मञ्चं प्रददाति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायंकाले 4:30 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन तमिलनाडुस्थे तैलवाती क्षेत्रस्य प्रमुखपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति, अपि च तस्याः आधारशिलामपि स्थापयिष्यते। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनाली इति स्थाने रामनाथपुरे थुथुकुडी प्राकृतिक वातिनलिकां गैसोलीन निराकरण घटकं च राष्ट्राय समर्पयिष्यति। श्री मोदी नागपट्टनमे कावेरी बेसिन रिफाइनरी इत्यस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यते। एतासां परियोजनानां परिणामस्वरूपे देशे सामाजिक आर्थिक लाभस्य ऊर्जायाः आत्मनिर्भरतायाः च वृद्धि भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य सीधी इति स्थाने ह्यः एका दुःखप्रदायी बसयान दुर्घटना विघटिता। सीधी इत्यस्य रामपुर नैकिन आरक्षकालये 54 यात्रिजनानां बसयानम् एकस्मिन् स्रोते अपतत्। सम्प्रति यावत् 47 मृतजनाः बहिः निष्कासिताः। घटनेयं रीवा सीधी सीमायाः निकटे अभवत्। वाहनचालकस्य त्रुटिवशात् दुर्घटना एषा जाता इति संसूचितम् अस्ति। COP26 इत्यस्य मनोनीताध्यक्षेण आलोक शर्मणा प्रधानमन्त्रिणा साकं कृतं मेलनं। ताभ्यां जलवायु परिवर्तनं COP26 भारत ब्रिटेन सहयोगं च आधृत्य विहिता चर्चा। पर्यावरण मंत्रिणा प्रकाश जावड़ेकरेण साकं मेलने पारंपरिकोर्जसं वर्धयितुम् अंगारकोत्सर्जने न्यूनतादिशि विहिता महत्वपूर्ण चर्चा। ध्यानास्पदं तथ्यमिदमस्ति यत् संयुक्तराष्ट्रस्य जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनस्य COP26 इत्यस्य अध्यक्षपदं स्वीकृतानन्तरम् एषा आलोक शर्मणः प्रथमा भारतयात्रा अस्ति। तस्य एषा यात्रा COP26 इति सम्मेलनस्य साफल्यं भवेत् इत्यस्मै वर्तते। अवसरेऽस्मिन् पर्यावरण मंत्रिणा प्रकाश जावड़ेकरेण उक्तं यत् आलोक शर्मणा सह विभिन्न विषयेषु चर्चाः जाताः, यासु पारंपरिक ऊर्जायाः प्रवर्धनं,
अंगारकोत्सर्जने न्यूनता इत्यादयः विषयाः प्रामुख्यं भजन्ते। We discussed all issues which are contemporary and which are important for negotiations in Glasgow, and I showcased him and told about various initiatives taken by India under dynamic leadership of Narendra Modi on renewables, on disaster resilient infrastructure, on adaptation, and on electrical buses, on metro expansion, our reduction of emission intensity and increasing tree cover. All we have discussed. So this was a very fruitful meeting. श्री रामचंद्र मिशन इत्यस्य 75 वर्ष पूर्त्यवसरे अंतर्जालीय माध्यमेन संभाषमाणो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्टीकृतवान् यत् भारतं वैश्विक कल्याणं विवर्धयितुं मानव केन्द्रित दृष्टिकोणं स्वीकर्तुं निरतं वर्तते। सः उक्तवान् यत् अयं दृष्टिकोणः जनानां स्वस्थ संतुलित विकासाय प्रसन्नताधारितो वर्तते। तेन उद्घुष्टं यत् रामचंद्र मिशन इत्येषा संस्था जनाः निरोगाः भवेयुः अस्यां दिशि अनवरतं प्रयासरता वर्तते। बाबूजी से मिली प्रेरणा को करीब से महसूस किया है। जीवन की सार्थकता प्राप्त करने के लिए उनके प्रयोग, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज के इस 2020 वाली दुनिया में गति पर बहुत जोर है। लोगों के पास समय की कमी है। ऐसे में सहज मार्ग के जरिए आप लोगों को स्फूर्त और आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् भारतं कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणम् अपाकर्तुं महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयन् अस्ति। राष्ट्रम् आध्यात्मिकम् आरोग्य पर्यटन केन्द्रं च विनिर्मातुम् असौ समाहूतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् भारतं गत 6 वर्षेषु विश्वस्य बृहत्तमानि लोककल्याणपराणि कार्याणि अनुष्ठीयत। अपि च तादृशाः प्रयासाः विधीयन्ते यहि निर्धनाः ससम्मानपूर्वकं जीवनं यापयेयुः। प्रधानमंत्री पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में अब योग और ध्यान को लेकर पूरी दुनिया में गंभीरता और बढ़ रही है। योग के साथ ध्यान की भी आज के विश्व को बहुत अधिक आवश्यकता है। दुनिया के कई बड़े संस्थान ये दावा कर चुके हैं कि अवसाद, डिप्रेशन मानव जीवन की कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि आप अपने हार्टफुलनेस कार्यक्रम से योग और ध्यान के जरिए इस समस्या से निपटने में मानवता की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः महाराजा सुहेलदेव स्मारकस्य चित्तौरा सरोवरस्य विकासकार्यस्य च दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन आधारशिलां स्थापितवान्। एषः कार्यक्रमः महाराज्ञः सुहेलदेवस्य जयन्तुपलक्ष्ये उत्तरप्रदेशस्य बहराइच जनपदे समायोजितः आसीत्। परियोजनायां सुहेलदेवस्य अश्वारोही प्रतिमायाः स्थापना, अतिथिभवनस्य विकासः, बालानाम् उद्यान विकास सदृशानि सौविध्यानि सम्मिलितानि सन्ति। अवसरे अस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा उद्घुष्टं यत् भारतस्य इतिहासः सः अस्ति यः केवलं दास्यं प्रवर्धकैः जनैः लिखितः, अपितु भारतीय इतिहासः सोऽपि वर्तते यः देशस्य सामान्यजनेषु दरीदृश्यते।
पुनश्च वीरगाथासु रचितः वर्तते। पुनश्च इतिहासोऽयं परम्परया अग्रे प्रवर्धते। प्रधानमन्त्रिणा महाराज्ञः सुहेलदेवस्य विषये कथितं यत् इतिहासस्य पुस्तकेषु यद्यपि महाराजा सुहेलदेवः स्थानं न प्राप्तवान्, परं तेन जनानां कल्याणार्थम् अहर्निशं कार्यं कृतम्। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है। ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। अशेषे हि देशे साम्प्रतं यावत् 87,00,000 जनेभ्यो कोविड-19 संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधम् उपकल्पितमस्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन संसूचितमस्ति यत् गत 24 होरासु 27,535,400,000 जनेभ्यः इदं सूच्यौषधं सुलभायितम्। अस्मिन्नेव क्रमे देशे कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमण प्रकोपं सम्मुखीकुर्वतां जनानां स्वास्थ्य मानाङ्कः प्रतिशतं 3.2 मितो अजायत। विगते अहोरात्रे 800,011 जनाः अमुं रोगं पराभूतवन्तः। स्वास्थ्य मंत्रालयेन संसूचितं यत् साम्प्रतं यावत् 6,00,000 संख्याकाः जनाः कोविड संक्रमणं धूलिसात् कृतवन्तः। साम्प्रतं देशे सक्रिय प्रकरणानां संख्या अनवरतं न्यूनतां गच्छति। देशे अधुना केवलं 2,87,837,000 जनाः उपचर्यन्ते। इंग्लैंड देशं विरुध्य प्रवर्तमानायां चतस्रीणां स्पर्धानां क्रिकेट निकष स्पर्धा मालिकायां ह्यः द्वितीयायां क्रीडायां भारतेन इंग्लैंड दलं 17,300 धावनाङ्कैः पराजित्य स्पर्धायाम् एकम् अंकं विरुध्य एकेन अंकेन समत्वम् अस्ति समधिगतम्। भारतेन इंग्लैंड देशाय 62,400 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् आसीत् विनिर्धारितम्, किन्तु तद्दलं 64 धावनाङ्कान् एव समधिगतवत्। भारतीय पक्षतः अक्षर पटेलः 5 क्रीडकान् अपि च रविन्द्रचन्द्रन् अश्विन् क्रीडकत्रयं क्रीडातो बहिष्कृतवान्। भारतेन स्वीये प्रथमे पर्याये 29,300 धावनाङ्काः अपि च द्वितीये पर्याये 86,200 धावनाङ्काः समधिगताः आसन्। तत्रैव इंग्लैंड दलं प्रथमपर्याये 64,100 अपि च द्वितीये पर्याये 64,100 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।